Welcome to our YouTube channel Education Fantasy, and my name is Bhakti Naik. Today we are going to start with a new chapter for Standard 7, but this is for SSC Board, that is the Living World Adaptations and Classifications. So in this chapter, basically we are going to study about the different adaptations which all the plants have. Now what is this adaptation? Adaptation is the changes which an organism makes in itself so that it is being able to live in that particular environment. As for example, we will take a daily life example. So for example, we have our exams. Okay, normally when we don't have our exams, we do playing, we do our homework, we watch TV, we watch films, and all the activities are done by us. But as soon as exam gets started, that means whenever we get our semester exams or maybe unit test exams, we change ourselves in such a way that we just stop watching all the movies or we stop watching all the films and all, but we only concentrate on studying. So why do we do that? Because we know that okay, exams are going to come now. And what change we need to do is, we need to study more. So for studying more, what we need to do? We need to stop watching those movies. Right? So in the same way, these plants will also adapt themselves. They will make some changes in themselves so that they are being able to survive in that particular environment. Okay? So this is basically the meaning of the word adaptations. Now in this chapter, we are going to find the answer to a question why. That what do I mean by that? Now as for example, if I say that a plant which lives in desert, okay, it has thorns. It has thorns, right? So why does it has thorns? So this answer to this why question, we have to find out in this particular chapter. Only and only then we will be able to understand this chapter completely. Okay, so now we'll start. So the first subtopic in this is adaptations in aquatic plants. Now what are aquatic plants? Aquatic plants are those plants which live inside the water. Okay, now in your textbook a very small section is given on this, but I have illustrated it somewhat so that it is easy for you to understand the concept behind it. That means they have just given the words, that is floating, submerged or immersed. So only these words have been mentioned. But we need to go to the base and we need to understand the meaning of all these types. Okay. So aquatic plants are mainly of three types. That is floating plants, submerged plants and emergent plants. What are these floating plants? So we'll go one by one on whatever adaptations they have. Okay. Now if we come to floating plants. In floating plants leaves are very tough. Now why are these leaves tough? Because they are just floating. And if for example if we consider that a very strong water current comes, then these leaves should not break. ठीक है, वो टूटने नहीं चाहिए. अगर बहुत बड़ा वेव अगर कोई आ गया वाटर का, तो ये जो लीव्स रहने चाहिए वो टूटने नहीं चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया? लीव्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया है. ठीक है. नेक्स्ट इज द वैक्सी क्यूटिकल. अब as we know that these plants live in water, right? So and these plants have some stomatas. Okay, as here I have mentioned, they have some stomata. अब ये stomata कहाँ होता है? Stomata is a part which is present here on the upper surface of the plant of the leaves. Okay, so from here actually in short if I say photosynthesis जो होता है, that is air का exchange, वो stomata के through होता है. ठीक है, and ये stomata होता है upper surface पे, right? Now many a times it happens that water comes and it covers it up. Okay, तो अगर ये कवर अप हो जाएगा तो क्या होगा? स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, राइट? और इफ स्टोमाटा इज गेटिंग क्लोज तो वो असर करेगा प्लांट के फोटोसिंथेसिस पे. ओके, सो दैट इज व्हाई इट हैज अ वैक्सी क्यूटिकल. अब इसमें वैक्सी क्यूटिकल का क्या काम है? वैक्सी क्यूटिकल मीन्स, वैक्सी मीन्स यू सिंपली अंडरस्टैंड इट स्लिपरी. तो ड्यू टू दिस स्लिपरी सब्सटेंस वाटर जो है वो लीफ पे
कलेक्ट नहीं होगा, वो ऐसे शिफ्ट होके वाटर जो है स्लिप होके चला जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वैक्सी क्यूटिकल. सो फ्लोटिंग प्लांट्स जो रहते हैं उनके पास वैक्सी क्यूटिकल होता है ताकि ये जो वाटर है वो कलेक्ट ना हो, और अगर वाटर कलेक्ट नहीं होगा तो स्टोमाटा कवर नहीं होगा, और स्टोमाटा कवर नहीं होगा तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो अच्छे से होगा. ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड. ओके, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर. So this was all about floating plants. Now let's go to submerged plants. Now अभी submerged, the meaning of the word is in the word itself. Submerged मतलब वो पूरे अंदर रहते हैं, ठीक है, पूरे अंदर. So vegetation. Now what is vegetation? मतलब उनके leaves, stems, fruits, flowers जो भी है, that is vegetation. Okay. तो ये जो vegetation होता है वो वाटर लेवल के नीचे रहता है. ओके, सो दिस वेजिटेशन इज बिलो द वाटर लेवल, पूरा अंदर रहता है. ओके, दीज प्लांट्स हैव वीक रूट्स. नाउ व्हाई वीक रूट्स? बिकॉज इनका मेन फंक्शन नहीं है कि वाटर एब्सॉर्ब करना है, राइट? एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, प्लांट्स हैव रूट्स सो दैट दे कैन एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, राइट? बिकॉज इवन व्हेन वी वाटर आवर प्लांट्स, हम कहाँ वाटर करते हैं? सॉइल में, ताकि soil has much of water so that plants can absorb it, right? But here what is it is happening? Plants are there in water itself. तो फिर roots का इतना काम नहीं बनता है, बनेगा ही नहीं roots का काम. They are not needed to absorb water. So they have a weak roots, okay, which are not much functioning. Okay. Next is air chambers. So why are these air chambers present? ये एयर चेम्बर्स जो होते हैं, चेम्बर्स मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड एज स्मॉल रूम्स. कौन से रूम्स? वो रूम्स जो एयर को अपने अंदर भर के रखेंगे. तो दीज एयर चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम. नाउ व्हाई स्टेम? whatever oxygen the plant, the submerged plant is producing from photosynthesis, वो जो है ये एयर चेम्बर्स में जाकर कलेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट एडेप्टेशन इज द sessile leaves. Sessile का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ लीफ ओवर हियर, ओके, दिस इज माई स्टेम, और ये ऐसे ही रहता है, राइट? लीव्स जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं. तो ये जो छोटा सा स्टॉक है ना, दिस इज द स्टॉक ऑफ द लीफ, राइट? सो sessile leaves मीन्स व्हाट? जो sessile leaves होते हैं वो कैसे होंगे? वो डायरेक्ट स्टेम से अटैच्ड लीव्स रहेंगे. उनके पास ये छोटा सा स्टॉक जो है वो नहीं रहेगा. अब ऐसे क्यों? नॉर्मल प्लांट्स के पास तो होता है, एज वी ऑल हैव सीन, बट सबमर्ज्ड प्लांट्स में sessile लीव्स रहते हैं, मतलब ऐसे लीव्स रहते हैं जो लीव्स डायरेक्टली स्टेम को ही अटैच्ड है. अब व्हाई दैट? बिकॉज दीज लीव्स जो होते हैं, दीज लीव्स व्हेन अटैच्ड टू द स्टेम, दे विल रिमेन मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा वेव्स आ रहा है या फिर वाटर करंट्स जोर से आ रहे हैं, तो ये जो लीव्स है वो स्टेम से अलग होके कहीं पे जाएंगे नहीं. जबकि जो ये स्टॉक रहता है ये बहुत वीक रहता है, छोटा सा भी अगर वेव आ जाए तो ये टूटकर लीव जो है वो अलग हो जाएगा. बट सबमर्ज्ड प्लांट्स के पास इसीलिए sessile लीव्स है, यानी दे डोंट हैव दैट स्टॉक. तो लीव्स जितना स्टेम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, दैट इज व्हाई दे हैव sessile leaves. नेक्स्ट इज द ribbon like leaves. ribbon like leaves मतलब ऐसे, ओके, जस्ट लाइक ribbon they have these leaves. Now why the leaves are ribbon like? क्योंकि ribbon like leaves जो रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर रहते हैं और वाटर करेंट्स की वजह से वो ऐसे कट होके कहीं पे जा नहीं सकते, कहीं से भी ऐसे कट होके they can't go. That is why these submerged plants have ribbon-like leaves. Okay. Now next go to emergent plants. Emergent plants we don't have much, but see, emergent plants are which plants? जिनका जो vegetation है वो ऊपर रहता है, water surface के ऊपर रहेगा vegetation. ठीक है, यहाँ पर कैसा था? In submerged plants we had vegetation all below the surface of water, but यहाँ पे जो है these emergent plants have vegetation above the water level. Okay, now these plants have flat leaves. Okay, flat leaves रहते हैं. क्यों?
वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब क्या, लीव्स भी आ गया वेजिटेशन में. लीव्स आर अबाउ द वाटर लेवल, राइट. तो उन्हें सनलाइट चाहिए. तो अगर उनके लीव्स फ्लैट होंगे तो उतने ही इजीली वो जितना उन्हें चाहिए उतना सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं. दे विल बी एबल टू एब्सॉर्ब सनलाइट. दैट इज व्हाई दीज प्लांट्स हैव, that is emergent plants have flat leaves. Okay, so we are done with adaptations in aquatic plants. Now let's go to the next part. Okay, so now we are coming to the next part, that is adaptations in the plants which live in desert region, snowy region and forest region. Okay, so a very small part is given in your textbook. We'll just go around whatever adaptations they have and we will find the answer to the question why. Okay, so let's start. Desert plants. Now what are desert plants? Plants which live in dry conditions, that is in desert regions, they are called as desert plants. Okay, now these plants have specific adaptation. First one is that the leaves which are there, they are modified in the form of needles or thorns. Kaate. In Hindi, if you say, that is kaate. So whatever leaves are there, they are in the form of needles. Now why leaves are in the form of needles? Because the main function of leaf is to do photosynthesis, right? And many a times what happens is that जो water रहता है leaf में, वो ज्यादा sunlight या फिर ज्यादा heat के वजह से evaporate हो जाता है, right? Now these plants are living in desert region. वो लोग वाटर लॉस को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो नहीं ये अपना वाटर जो है वो वेस्ट जाने दे सकते हैं, राइट. तो उनको दे नो दैट इफ लीव्स आर देयर सो वाटर इवेपोरेशन विल बी देयर एंड इफ वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड देन दे विल फील स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, राइट. सो व्हाट दे डू, उनका जो लीव्स रहता है उनको वो नीडल या फिर थॉर्न्स के टाइप में वो लोग चेंज कर लेते, वो उन्होंने अडाप्ट कर लिया. व्हाई? बिकॉज दे आर लिविंग इन दीज कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट इज फ्लैशी स्टेम. तो जो स्टेम रहता है दैट इज एक्चुअली ग्रीन इन कलर. ओके, हियर द स्टेम इज ग्रीन इन कलर. इट इज वेरी लार्ज एंड इट इज फ्लैशी. व्हाई? बिकॉज ये स्टेम्स के अंदर वाटर प्रिजर्व करके रखते हैं ये डेजर्ट प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट इज स्टेम्स आर हियर प्रोवाइडिंग परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. व्हाई? फोटोसिंथेसिस काम तो किसका था? लीव्स का था. बट लीव्स तो यहाँ पर बन गए हैं नीडल्स. तो अब जब लीव्स बन गए हैं नीडल्स तो अब फोटोसिंथेसिस किसी को तो करना ही पड़ेगा, राइट. वरना फिर प्लांट अपना फूड कैसे बनाएगा? तो वो जो है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन अप बाय स्टेम्स, क्योंकि स्टेम्स जो है वो ग्रीन इन कलर है. तो यहाँ पर इन डेजर्ट प्लांट्स stems perform the function of photosynthesis. Okay, next coming to the plants which live in snowy regions. Okay, now here whatever the plants are there or whatever trees are there which live in snowy regions, they are always present in dense forests. Okay, normally they live in they all grow in dense forests. That means सारे जो trees है वो collectively grow होंगे. क्यों? So that there is warmth which is maintained in the environment. Okay, क्योंकि as we know कि snowy regions है, so it is very much cold climate, right? Now next is cone shaped. Normally if you have seen the plants or the trees which grow in snowy regions, वो जो रहते हैं वो ऐसे टाइप के रहते हैं, right? Like a cone. It's like a cone, right? It's like a cone. तो ऐसे क्यों रहता है? Because since they live in snowy regions, snowfall तो होगा. तो जो भी स्नोफॉल होगा वो जो स्नो है वो इनके लीव्स पर आकर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. एंड वी डोंट वांट दैट कि जो स्नो है वो पूरा कलेक्ट हो जाए हमारे प्लांट में या फिर हमारे ट्री में. तो इसीलिए ये जो ट्रीज रहते हैं वो सारे कॉन शेप्ड रहते हैं. क्यों? ताकि जो स्नो है वो कलेक्ट ना हो और वो स्लिप होके नीचे गिर जाए. ओके, नेक्स्ट अडेप्टेशन इज bark is very thick. Now why bark is very thick? So that same reason, so that थोड़ा warm रहे वो अंदर से, ठीक है. Because they have to withstand the cold climate which they face in these snowy regions. Okay. Now next we come to forest region. Which we are very common with, I think so. So whatever trees grow in forest region,
they always compete for sunlight. Compete means what? जो फॉरेस्ट रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट, उसमें बहुत सारे ट्रीज रहते हैं, राइट? और बहुत सारे ट्रीज की एक ही रिक्वायरमेंट है, एक मतलब और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बट एक जो है मेजर रिक्वायरमेंट वो है सनलाइट. दे ऑल वांट सनलाइट, राइट? तो उनको सनलाइट कहाँ से मिलेगा? जितने वो टॉल ग्रो होते जाएंगे उन्हें आसानी से सनलाइट जो है वो मिल जाएगा. ओके, तो दैट इज वाई हियर इट इज रिटन एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट. मतलब उन सारे ट्रीज के बीच में कॉम्पिटिशन होती रहती है कि उन्हें ज्यादा सनलाइट चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. एज आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन माय लास्ट लेक्चर कि क्लाइंबर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द प्लांट्स विच आर वेरी वीक. वो खुद से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, तो व्हाट दे विल डू? दे विल ग्रो ऑन सम अदर प्लांट. मतलब that particular plant will takes the support of some other plant and it will grow, right? तो ये जो है ये भी एक adaptation है जो plants लेते हैं, क्योंकि as I told कि if I am weak in something, I am not being able to grow, then what I will do? I will take the support from some other person. Okay? Same चीज plants करते हैं, because they have this weak point that they are weak, they are not being able to grow. They will just take a plant and they will grow on that particular plant. और ये ग्रो करने में उनको कौन हेल्प करता है? टेंड्रिल्स. नाउ द मेन योर अडेप्टेशन जो है ये क्लाइंबर्स लाते हैं वो है टेंड्रिल्स. अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं? ये वायर लाइक जो रहते हैं अपेंडेजेस रहते हैं, ठीक है? वायर लाइक अपेंडेजेस विच क्लाइंबर्स हैव. ठीक है, अब ये वायर लाइक जो रहते हैं वो लोग, ये टेंड्रिल्स जो है they are wire like and they will help these climbers to grow upon the some other plant. Okay, so that they are strong enough. Okay, understood? So these were the adaptations of the plants or the trees which grow in the different regions. Okay, okay, so for today we are stopping here only. Please do like and share our videos if you like it. Do not forget to subscribe our channel. And please hit the bell icon to get the latest updates about our upcoming videos. Thank you.